In Java, for a single class, we can able to create four static member: static block, static variable, static method, static nested class. Basically, in my class of object, I mentioned that whenever you create n number of object for a class, for every copy of object, the separate copy of instance member will create. But if your member is static member, then for every copy of the object, a single copy of static member will be created, which can be shared by each and every object. So by using static, we can able to assign one global flavor in Java. Basically, in Java, there is no such a variable or no such a method which is known as global. But by using static, we can able to assign that. Basically, static is used to memory management. And to access any static member, we don't require any object. The most common example of static member is main method. In Java, for every class, main is always static, because for main we don't require to create any object. And in Java, without creation of object, if we want to access any member, then that member must be static member. In a single class, we can able to create four static member, static block. Normal blocks are created by using second bracket open, second bracket close. Now before that second bracket, if we write static, then that is static block. Static blocks are used to initialize the static variables. Static variables are also known as class variables. And static blocks are invoked automatically even before JVM loads the main. Up to now, we know that in a particular program, the program must start with the main. But in a program, if static block is present, then that will execute even before main. In a particular class, we can able to define more than one static block, and they are executed as per their order of present. Okay, and they all are executed before the main. Static variables, same like instance variable, but we have to declare them by using the static keyword. And we can able to access anywhere in the class without creation of object. Static method are same as normal instance method, but we have to define them by using the keyword static. Now the most important thing regarding to static is we can able to use static member of a class within another static member of the same class directly. But if we want to use static member of the class into another static member of another class, then we require class name dot member name, but object is not required in both the cases. And if we wish, then we can able to create a class within class, and the inner class we can able to make static, and that behave like the same as static member of a class. So that is the concept of static nested class. So today I will focus on static block, static variable, static method, and static nested class. Now look at the material. প্রত্যেকটা ম্যাটেরিয়ালটা দেখা যাচ্ছে? Yes sir. যেটা বললাম, যতটা বললাম ততটাই এবার পড়াবো, ঠিক আছে? যা যা বললাম সেটাই দেখাবো। কি লিখেছি? In Java, keywords are the reserved words that cannot be used as identifier. এটা যে কোনো लैंग्वेज है, कोई भी लैंग्वेज में कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड रिजर्व वर्ड होता है जो हम लोग आइडेंटिफायर यानी कि वेरिएबल नेम, कांस्टेंट नेम के हिसाब से इस्तेमाल कर नहीं सकते। In total, there are 57 keyword in Java. Java में total ना 57 keyword है. One among them is static. उनमें से एक है static. In this article, I will give you a brief insight into how static keyword in Java is applicable for various aspects. आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि Java में static keyword various aspect में कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं. So, introduction to static keyword in Java. In Java, static keyword is mainly used for memory management. স্যার এই কথাটা কেন বলছেন? তোদেরকে যখন আমি অবজেক্ট বানানো শিখিয়েছিলাম, আমি বলেছিলাম একটা ক্লাসের যতবার অবজেক্ট বানাবি, অবজেক্টের প্রত্যেকটা কপির জন্য ইনস্ট্যান্স মেম্বারগুলোর আলাদা আলাদা কপি তৈরি হবে। বলেছিলাম, মনে পড়ে? Yes sir. কিন্তু তুই ক্লাসের যতই অবজেক্ট বানা, স্ট্যাটিক মেম্বারের একটাই কপি থাকবে। তাই জন্যই বলা হয় মেমোরি ম্যানেজমেন্টে স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডটা ইউজ করা হয়। মেমোরি বেশি ইউজ হচ্ছে না। Static can be used with variable, method, block, and nested class. It is a keyword which is used to share the same variable or method of a given class. Can we কথাটা বললো? Why I mentioned that one? Because I already mentioned static member will occupy a single memory space, and that memory space share between all the objects. मान ले क्लास का 5टा ऑब्जेक्ट बनाया और क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल, एक स्टैटिक मेथड डिफाइन किया, तो
तो स्टैटिक वेरिएबल मेमोरी में एक ही जगह में बैठेगा और 5 ऑब्जेक्ट उसको शेयर करेगा। जो भी ऑब्जेक्ट से तू उसको एक्सेस करे सेम ही वैल्यू पाएगा। दैट इज द कॉन्सेप्ट। बेसिकली स्टैटिक इज यूज्ड for a constant variable. Constant means not value, that is constant memory. Okay, or a method, that is constant memory for the variable, constant memory for the method. That is same for the every instance of the class. The main method of a class generally labeled static. In order to create a static member, you need to precede its declaration with the keyword static. कोई भी static member को define करने से पहले आपको member से पहले static keyword लिखना है। When a member of the class is declared as static, जब भी कोई class का member static हम लोग declare करते हैं, it can be accessed before the object, okay, without any object reference. So there are 4 static member we can able to define for a class: static block, static variable, static method, static class. Now I will show you the concept of static block. Look at the example of static block. What I write here: if we need to do the computation in order to initialize your static variable, you can declare a static block that gets executed exactly once when the class is first loaded. কি বললাম? আমাদের যদি মনে হয় স্ট্যাটিক ভেরিয়েবলকে আমরা ইনিশিয়ালাইজেশন করব কোন রকম অপারেশন পারফর্ম করে, তাহলে সেই অপারেশনটা আমরা স্ট্যাটিক ব্লকের মধ্যে লিখতে পারি। স্ট্যাটিক ব্লক একবারই কল হয় মেন মেথড লোড হওয়ার আগে। अगर हमारे दिल ने चाहा कि हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे कुछ ऑपरेशन इंप्लीमेंट करके, तो हम लोग उस ऑपरेशन को स्टैटिक ब्लॉक के अंदर लिख सकते हैं। स्टैटिक ब्लॉक एक बार ही एग्जीक्यूट होगा मेन मेथड लोड होने से पहले। लुक एट द प्रोग्राम। ये प्रोग्राम में इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार का कोई जरूरत नहीं था, इसीलिए मैं पब्लिक क्लास ऐसे ही दिखा रहा हूँ। Here I define a class, public class A. Within that class I declare 2 static variable. One is J, where I stored the value 10 because that is integer. Another is N. Now I define one static block. দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. Within the static block I print static block initialized, and within N I assign J into it. So any one of you tell me when that block will execute? এই ব্লকটা কখন এক্সিকিউট হবে? মেথড কল হওয়ার আগে, মেন কল হওয়ার আগে নিজে থেকেই এক্সিকিউট হবে। So if I run the program, at first that will print static block initialized, then within N they will assign J into it. Okay. Now main, within main, control move to main and print inside main method. Now look, within main I print J and N directly. How I can able to do that? Anyone tell me? main এর মধ্যে J আর N টাকে ডাইরেক্টলি করে ইউজ করতে পারলাম। Static variable বলে সেম ক্লাসের। যদি অন্য ক্লাসের হতো क्लास नेम डॉट वेरिएबल नेम भी यूज करते हो। हाँ, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था एक क्लास का स्टैटिक मेंबर को उस क्लास का दूसरा स्टैटिक मेंबर में हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मेन भी स्टैटिक है, जे एन भी स्टैटिक है। जे एन मेन सब एक ही क्लास के अंदर है, इसीलिए जे एंड एन को हम लोग मेन के अंदर डायरेक्टली यूज कर पाए। Here main static as well as J and N static, and both are all are same class. That's why you can able to use J and within the main. Okay. So that is the output. Clear? Now static variable. When you declare a variable as static, then a single copy of the variable is created and divided among all the objects of the class level. I mentioned that one already. যদি ক্লাসের কোনো ভেরিয়েবল को স্ট্যাটিক বানাস ওর একটাই কপি তৈরি হয় और सब ऑब्जेक्ट এটাকে শেয়ার করে। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था अगर कोई भी वेरिएबल या फिर मेथड आप लोग स्टैटिक लिए हो उसका एक ही कॉपी तैयार होता है जिसको सारा ऑब्जेक्ट शेयर करता है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर एसेंशियली ग्लोबल वेरिएबल्स। ओके, जावा में ग्लोबल बोलकर कुछ नहीं है, मगर स्टैटिक के जरिए ग्लोबल का थोड़ा सा एसेंस हम लोग पैदा कर सकते हैं, क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल का एक ही मेमोरी होगा, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के जरिए उसको अगर अपडेट करे बाकी सारा ऑब्जेक्ट भी अपडेट वैल्यू ही पाएगा। है कि नहीं सर? Yes, sir. Yes, sir. Basically, all the instances of the class share the same static variable. Look at the example. Here I define a class A. Within that class A, I declare one static variable J, which I initialize with a static method N. So that will print from main and within J store 20. Then I define one static block that will print inside the static block. Then I print J within main and print inside main method. Nothing else. Very simple program. Static method, when a method is declared with the static keyword, it is known as static method.
The most common example of a static method is main method. Method declared as static can have the following restriction. They can directly call other static methods only. मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि static member उस class का बाकी सारा static member कोई direct call कर सकता है. They can access static data directly. Okay. And to use non-static member, they require the object. क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो कि main के अंदर कोई static member इस्तेमाल हम लोग डायरेक्ट कर पाते हैं, मगर नॉन स्टैटिक मेंबर इस्तेमाल करने के लिए ऑब्जेक्ट बना के कॉल करता है कि नहीं सर? হ্যালো স্যার একবার বলেন স্যার। বললাম মেনের মধ্যে যদি অন্য কোনো স্ট্যাটিক মেম্বার ইউজ করতে হয় ওই ক্লাসে ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারি তো? Yes, হ্যাঁ sir. স্যার। কিন্তু অন্য কোনো মেম্বার কি ইউজ করতে গেলে যেগুলো স্ট্যাটিক মেম্বার নয় অবজেক্ট বানিয়ে ব্যবহার করতে হয় না, ভুলে গেলি? না স্যার, শুনতে পাইনি তাই বলে। হ্যাঁ সেটাই বললাম যে স্ট্যাটিকের রেস্ট্রিকশন হচ্ছে স্ট্যাটিক শুধু স্ট্যাটিক কি ইউজ করতে পারবে ডাইরেক্টলি, অন্য কাউকে ইউজ করতে গেলে অবজেক্ট লাগবে। চলো বুঝছো? প্রত্যেক প্রোগ্রামটা দেখতে পাচ্ছ এভরিওয়ান? প্রোগ্রামটা দেখাতে পাচ্ছ? Here I define a class A. Within the class A, at first I declare one static or class variable, that is static int A. Then I declare one instance variable int X. Then I define one static block. So A এর কতগুলো কপি তৈরি হবে রে ভাই? Only one. Single copy. আর X এর কতগুলো কপি তৈরি হবে? যতবার মেথডটা কল করব, যতগুলো ইনস্ট্যান্স, যতবার অবজেক্ট বানাবো। কে বলছে যতবার মেথড কল করব এক্সট্রা আবার কোনো মেথড নেই? অবজেক্ট কল করব, যতবার অবজেক্ট বানাবো, অবজেক্ট কল না অবজেক্ট বানাবো। অবজেক্ট এখানে দুবার বানিয়েছি, দেখতে পেয়েছিস? মন দিয়ে শোন প্রত্যেকে। Here I create object twice. So for M, one copy of X will create, for N another copy of X will create. But for M and N both, a single copy of A will create. That is the concept. Now this is a static block that will execute first, and whenever I run the program within A, 24 will be assigned, and that will print inside static block A equals to 24. Then this is non-argument constructor where I initialize X with 7 and print the value of X. Then this is the method, this is a static method where I print inside static method. Now look, within the main, so whenever I run the program, at first that will move to the static block and print inside static block A equals to 24. Then control move to main. In the main, I create object of A twice. So for both the cases, non-argument or default constructor will invoke, and that will print constructor of class A X equals to 7 twice. Then look how I print small a within demo. Main method and static variable A both in different class. And I mentioned within the static member, if we want to access static member of another class, we require class name dot member name. That's why we write capital A dot A. Okay, same capital A dot MSG. If that main I define within class A, then that class name is also not required. প্রত্যেকে বুঝতে পারলো কি বললাম? স্মল এ আর এমএসজি টাকে ইউজ করার জন্য অবজেক্ট আমি লাগাইনি, কারণ ওই দুটো স্ট্যাটিক ছিল, কিন্তু আলাদা ক্লাসের বলে ক্লাস নেম ডট মেম্বার নেম দিয়ে ইউজ করেছি। প্রত্যেকে বুঝতে পেরেছে? यस सर। স্যার যদি অবজেক্ট দিয়ে কল করতেন কোনো অসুবিধা হতো? কোনো অসুবিধা হতো না, কিন্তু দরকার নেই বলে করিনি। ঠিক আছে सर, क्लास का स्टैटिक मेंबर को अगर ऑब्जेक्ट बना के कॉल किए कोई एरर आता है? एरर नहीं आता है, जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए नहीं किए। एरर क्यों आएगा? एरर नहीं आएगा। Look at the output. At first, control move to the static block and print inside static block A equals to 24. Then we create then control move to main, and within main we create object of A twice. So control move to the constructor twice and print constructor of class A X equals to 7, constructor of class A X equals to 7. Then I calls from class A equals to capital A dot A, that print 24. Then I call the MSG by using capital A dot MSG, that print inside static method.
প্রত্যেকে বুঝেছে? Yes, sir. এবার এই मेथड এই মেনটা যদি উপরের ক্লাসেই থাকতো, ये मेन अगर ऊपर वाला क्लास में ही रहता ना, तब ये इस्तेमाल ही नहीं करते हम लोग, डायरेक्ट इस्तेमाल करते हैं कि नहीं सर? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और ये अगर अलग क्लास में रहता और हम लोग डायरेक्ट इस्तेमाल करते तब एरर क्या आता है देखो। Now you have to know the error. Cannot find the symbol. Small a और MSG क्या है उसको पता नहीं चल रहा है, डायरेक्ट इस्तेमाल कर नहीं पाते क्योंकि अलग क्लास में, तो क्लास नेम लगेगा। ठीक है सर? Yes, sir. Yes, sir. Up to this anyone have any doubt? Up to this anyone have any doubt? I already show you the concept of static block, static variable and static method. Anyone have any doubt? Okay. If no, then I will move into another example which I create for you guys. বেশি ছোট হয়ে গেল, চোখে দেখা যাচ্ছে না, না দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে? Yes, sir. In Java, for a single class, we can able to create another block which is known as instance initialization block. And there is look like second bracket open, second bracket close. এই প্রোগ্রামে একটা ব্লক বানিয়েছি দেখতে পাচ্ছিস এই জায়গাটাতে, দেখতে পেয়েছিস এভরিওয়ান? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. That kind of block is known as instance initialization block. इस ब्लॉक के पहले अगर स्टैटिक लिखते स्टैटिक ब्लॉक हो जाता, अगर स्टैटिक नहीं लिखे तो ये इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक होगा। And the main purpose of instance initialization block is to initialize the instance variable. But constructor do the same. That's why we not use that one. But if we wish, then we can able to use that one also. Now the question is arise. That one will invoke when? When that one will invoke? Anyone tell me? আমি কি বললাম? সেকেন্ড ব্র্যাকেট ওপেন সেকেন্ড ব্র্যাকেট ক্লোজ যদি করি তার মধ্যে কিছু কাজ করি সেই ব্লকটাকে বলা হয় ইনস্ট্যান্স ইনিশিয়ালাইজেশন ব্লক। এটারও মেন কাজ হচ্ছে ইনস্ট্যান্স ভেরিয়েবলকে ইনিশিয়ালাইজ করা, কিন্তু কনস্ট্রাক্টরেরও কাজ সেম, ওই জন্য এটা আমরা পুরো ব্যবহার করি না, কিন্তু যদি ব্যবহার করি তাহলে এটা কখন কল হবে? Sir, as the name suggests, whenever an instance is initiated, এটা কনস্ট্রাক্টর মতন কাজ করে তো সবটা আগেই বলেছে। Whenever we create object of the class, then within a class, if instance initialization block present, then every time before invocation of constructor that one will invoke. If not present, then not invoke. Basically in Java, in a program, if default constructor not present, but we create object of the class without argument, then Java compiler provides default constructor, but Java compiler not provide that one. So if that one is present, then that one will invoke every time before invocation of constructor. Instance initialization block যদি ক্লাসে থাকে, ক্লাসের যতবার অবজেক্ট বানাবি কনস্ট্রাক্টর কল হওয়ার আগে এটা কল হবে। इंस्टेंस इनिशियलाइजेशन ब्लॉक अगर क्लास में प्रेजेंट है तो क्लास का जितना बार ऑब्जेक्ट बनाओगे हर बार कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले ये कॉल होगा। एवरीवन गॉट माय पॉइंट? एवरीवन गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. So look at the program. Here I create a class static ex. Within the class static ex, I declare two static variable ab. Okay. Then I define two static blocks. Static block number 1, static block number 2. Within static block number 1, I initialize A. Within static block number 2, I initialize B. A question will be arise, sir, can we able to initialize both of them in the same static block? Yes, we can able to do that. But here in the program, I just define two static block. Okay. So they are executed as per their order.
तो पहले स्टैटिक ब्लॉक 1 एग्जीक्यूट होगा, फिर स्टैटिक ब्लॉक 2 एग्जीक्यूट होगा. Then I define one non-argument constructor of the class static ex, which print constructor of class static ex. Then I define one instance initialization block, which will print instance initialization block. Then I overload the static method voidm, and I show you that static method can be overloaded. Yes or no, sir? Yes, sir. Yes, sir. So whenever I run the program, at first static block 1 will execute and print static block 1 a equals to 10, then static block 2 b equals to 5, then control move to main, and in the main I create object of class static ex. How many times? 2 times. 2 times, sir. So in both the cases, what will happen? Sir, instance initialization block would be printed. আর কনস্ট্রাক্টরটাই ক্রিকেট খেলবে। ইনিশিয়ালাইজেশন ব্লকটা ফার্স্ট ডিক্লেয়ার্ড হবে, তারপরে কনস্ট্রাক্টরটাও তো কল হবে নাকি? তারপরে কনস্ট্রাক্টরটাও কল হবে। So in both the cases same. Then I call classname dot method name m, then classname dot method name m with passing a value 7, so overloaded methods are invoked. Then look, I mentioned previous that we can able to invoke static member by using object. There is no issue. I call e1.a. Okay. After that, within e2.a, I store 15. Then again I print e1.a. Basically, I want to show you that e1 and e2 share the same a. तो e2.a में अगर 15 करे, उसके बाद अगर e1.a प्रिंट करे तो वो भी तो 15 आएगा, है कि नहीं सर? Yes, sir. अगर दोनों का अलग कॉपी होता तो ये नहीं होता। तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को रन करके। जावा सी स्टैटिक ex जावा जावा डेमो বুঝতে পেরেছিস প্রত্যেকে? At first, control move to static block 1 and print static block 1 a equals to 10. Then control move to static block 2 and print static block 2 b equals to 5. Then control move to main, and within main I create object of class static ex twice. First time when I write static ex e1 equals to new static ex, instance initialization block will invoke. Then non-argument or default constructor will invoke. That's why I print instance initialization block constructor of class static ex. Then I create object of class static ex again by using the reference e2. So again instance initialization block will invoke at first, then non-argument or default constructor will invoke. That's why I print instance initialization block constructor of class static ex. Then I call the method m with static ex class name because I have to use that in the different class static. That's why class name dot member name. So that will print static method 1 of class static ex. Then I call static ex dot m7. So the second one will invoke overloaded method. That will print static method 2 of class static ex. Then I print e1.a. What is the value of a? 10. So 10 will print. But within e2.a, I store 15. So that will change in e1.a also. So now whenever I print e1.a, that will print 15 also. Because for static member, a single copy will be created which can be shared between all the objects. Clear, sir? Yes, sir. Static variable, static method, static block, instance initialization block. স্যার হ্যাঁ বলো স্যার, বলো। স্যার বলছি অবজেক্ট যতবারই ক্রিয়েট হোক না কেন স্ট্যাটিক ব্লকটা কি একবারেই ডিক্লেয়ার হবে? ডিক্লেয়ার হবে না কল হবে, কোনটা তো দাবি? কল হবে বলছি। দুটোর মধ্যে পার্থক্য আছে কিন্তু। হ্যাঁ, স্ট্যাটিক ব্লক কল হয় মেনের আগে, অবজেক্ট তো মেনের ভিতরে বানাচ্ছি। অবজেক্ট তৈরি হওয়ার সাথে স্ট্যাটিক ব্লকের সম্পর্ক কি? Static blocks are invoked even before JVM loads the main. Clear? Static block invoke হয় JVM main load করার আগে। তো স্ট্যাটিক ব্লকের সাথে তো মেনের কোনো সম্পর্কই নেই, মেনে ঢোকার আগেই তো স্ট্যাটিক ব্লক ইনভোক হয়ে যায়। যতগুলো স্ট্যাটিক ব্লক রাখবি পরপর এক্সিকিউট হবে, ঠিক আছে? তুই এখানে দেখ, আমি স্ট্যাটিক ব্লক গুলো কিন্তু মেইন যে ক্লাসের মধ্যে আছে সেখানেও রাখিনি, আলাদা ক্লাসে রেখেছি, তাও কিন্তু মেনের আগেই ও এক্সিকিউট হয়েছে। বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ।
Anyone, any other question regarding to that? আর কারোর কোনো অন্য কোশ্চেন আছে? Anyone? Otherwise, I will move into the concept of nested class. এই অবধি কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? Anyone, I ask again and again because that is very important for the campusing. In any IT technical campusing, you can face the question, what is the use of static keyword in Java? প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। হ্যাঁ, জাভাতে স্ট্যাটিক কিওয়ার্ডের ইউজ কি, মানে আমি বহুবার দেখেছি এই কোশ্চেন করে গেছে, তাই জন্য আমি বারবার জিজ্ঞেস করছি। কারোর যদি কোনো ডাউট থাকে, এনি ডাউট, দেন প্লিজ আস্ক মি, প্লিজ। এনিওয়ান, এনি ডাউট? Okay. If no, then I will move into another concept which is known as nested class. Nested class indicates class within class. Nested class মানে কি? Class within class, একটা ক্লাসের ভেতরে আরেকটা ক্লাস। And the inner class we can able to make a static. जो अंदर वाला क्लास है ना, उसको अगर हम लोग चाहे तो स्टैटिक बना सकते हैं। ভেতরের ক্লাসটাকে আমরা কি বানাতে পারি স্যার? Static, sir. স্ট্যাটিক বানাতে পারি। If we wish, then we can able to make the inner class a static. Look at the material what I write over there. In Java, it is possible to define a class within another class. Such classes are known as nested classes. जावा में अगर हम लोग चाहे तो ये पॉसिबल है कि एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास हम लोग बनाए। उस अंदर वाला इस कॉन्सेप्ट को हम लोग नेस्टेड क्लासेस कहते हैं। জাভাতে যদি আমরা চাই তাহলে আমরা পারি একটা ক্লাসের ভেতরে আরেকটা ক্লাস বানাতে। কনসেপ্টটাকে বলা হয় নেস্টেড ক্লাস, ঠিক আছে? They enable you to logically group classes that are only used in one place. Thus, this increase the user encapsulation and create more readable and maintainable code. ये क्या enable करता है? Logically group कर सकता है same type of classes को, जो increase करता है encapsulation का use को और code को और भी readable बनाता है, ठीक है? The scope of a nested class is bounded by its by the scope of its enclosing class. जो अंदर वाला क्लास है ना, जो अंदर वाला क्लास है उसका स्कोप बाहर वाला क्लास तक ही होगा, उसके बाहर नहीं होगा। ओके, बेसिकली to use nested class outside the outer class, we have to create the object of it. Without object, we can't able to access it. I will show you. ইনার যে ক্লাসটা, সেটাকে যদি আউটার ক্লাসের বাইরে অন্য কোথাও মেনি ইউজ করতে হয় তাহলে ক্লাসটার অবজেক্ট বানাতে হবে। অবজেক্ট ছাড়া কিন্তু পসিবল নয়, ঠিক আছে? A nested class has access to the member including private member of the class in which it is nested. However, the reverse is not true. That means the enclosing class does not have access to the member of the nested class. सर इस लाइन का मतलब क्या है? जो अंदर वाला क्लास है ना, वो बाहर वाला क्लास का प्राइवेट मेंबर को भी एक्सेस कर पाएगा, मगर बाहर वाला क्लास अंदर वाला क्लास का कोई मेंबर को वैसे एक्सेस कर नहीं पाएगा। That is the concept. A nested class is also a member of its enclosing class. Nested class enclosing class का member ही होता है। As a member of its enclosing class, a nested class can be declared private, public, protected. Nested class को हम लोग private, public, protected कुछ भी रख सकते हैं। We can able to create two kind of nested class. One is static nested class, another is inner class. अंदर वाला क्लास को अगर हम लोग स्टैटिक बनाए उसको कहते हैं स्टैटिक नेस्टेड क्लास, और अगर स्टैटिक ना बनाए उसको कहते हैं इनर क्लास। এবার যেটা বলছি প্রত্যেকে মন দিয়ে শোনো, अब जो कहूंगा वो ध्यान से सुनना। Static nested class can able to access all the static member of outer class directly because they are act as a static normal static member of the outer class. Static nested class না outer class এর normal static member এর মতনই বিহেভ করে, মানে আউটার ক্লাসের সব স্ট্যাটিক মেম্বার গুলোকে ওর মধ্যে ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবি, নন স্ট্যাটিক মেম্বার গুলোকে ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবি না। स्टैटिक नेस्टेड क्लास ना आउटर क्लास का स्टैटिक मेंबर की तरह ही काम करता है। उसके अंदर आप लोग आउटर क्लास का सारा स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाओगे, मगर नॉन स्टैटिक मेंबर को डायरेक्ट इस्तेमाल कर नहीं पाओगे। और एक चीज, स्टैटिक नेस्टेड क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है ना, तो आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आउटर क्लास का नाम ही काफी है, ठीक है? मगर हम लोग अगर नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास जिसको कहते हैं इनर क्लास वो बनाए ना, वो आउटर क्लास का सारा मेंबर को एक्सेस कर पाएगा, मगर उसको इस्तेमाल करने के लिए दिक्कत है। दिक्कत क्या है? नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास या फिर इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। नॉन स्टैटिक नेस्टेड क्लास বা ইনার ক্লাসের অবজেক্ট বানাতে গেলে আগে আউটার ক্লাসের অবজেক্ট বানাতে হয়। আমি দুটোই দেখাচ্ছি। Look at the example. Here I create a class outer class, within that we define another class nested class. Okay,
तो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ नेस्टेड क्लास। अगर क्लास नेस्टेड क्लास उसके पहले हम लोग स्टैटिक लिखते तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास हो जाता और कुछ नहीं है। আচ্ছা কেউ একটা অ্যাটেন্ডেন্স তো তুলে রাখবি এনিওয়ান Yes, তুলে আমাকে sir. সেন্ড করে দিস। What is static nested classes? As with class method and variable, a static nested class is associated with its observed class. And like static class method, a static nested class cannot refer directly to the instance variable or method defined in its enclosing class. It can use them only through the object. কিছুক্ষণ আগেই আমি এটা বলেছি যে স্ট্যাটিক নেস্টেড ক্লাস আউটার ক্লাসের স্ট্যাটিক মেম্বার গুলোকে ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবে, অন্য মেম্বার গুলোকে ডাইরেক্ট ইউজ করতে পারবে না। मैंने कुछ देर पहले ही बताया कि स्टैटिक नेस्टेड क्लास आउटर क्लास का सिर्फ स्टैटिक मेंबर को ही डायरेक्ट यूज कर पाएगा, दूसरे मेंबर को डायरेक्ट यूज कर नहीं पाएगा। ओके, so I will, and this is the concept how we can able to create object of static nested class. Outer class का नाम dot static nested class का नाम प्लस रेफरेंस वेरिएबल इक्वल्स टू न्यू, अगेन आउटर क्लास नेम डॉट स्टैटिक नेस्टेड क्लास नेम। मगर यहाँ पर आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आउटर क्लास का नाम ही काफी है। स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आउटर क्लास का नाम ही काफी है। To create object of static nested class, outer class name is sufficient. We don't require to create object of outer class. Okay, so I will show you one program. Look at the example. Here I create one outer class, outer class. Okay, and within that outer class I declare three variables. One is static integer, another is non-static integer, another is private static integer. Now within class outer class, I define one static nested class, static class static nested. Within that I define a method display. Now within the display method, can I able to access all the three variables? এই তিনটেকেই কি ডিসপ্লের মধ্যে ইউজ করতে পারবো ডাইরেক্টলি? স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল গুলোকে পারবো, ইনস্ট্যান্সটাকে পারবো না। তার মানে আউটার আন্ডারস্কোর ওয়াইটাকে পারবো না, বাকি দুটোকে পারবো। দেখ পেরেছি। आउटर अंडरस्कोर एक्स को प्रिंट किया, आउटर अंडरस्कोर प्राइवेट को भी प्रिंट किया, मगर आउटर अंडरस्कोर वाई को प्रिंट नहीं किया, डबल स्लैश दे दिया। ठीक है স্যার? ইয়েস স্যার। Yes. এবারে এই ডিসপ্লেটাকে যদি মেনে কল করতে হয়, এই ডিসপ্লেটাকে যদি মেনে কল করতে হয় তাহলে স্ট্যাটিক নেস্টেড ক্লাসের অবজেক্টটা বানাতে হবে। স্ট্যাটিক নেস্টেড ক্লাসে কি করে অবজেক্ট বানিয়েছি দেখ। Define the class demo, within that define the main method, within that I create the object just like that, outer class name dot static nested class name, this reference variable equals to new outer class name dot static nested class name. Now by using obj I can call display. এবার outer underscore y টা তো অ্যাক্সেস হয়নি, তাহলে ওটাকে অ্যাক্সেস করার জন্য outer ক্লাসেরও একবার অবজেক্ট বানিয়ে নিলাম। বুঝতে পারলি? ইয়েস স্যার। तो स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आउटर क्लास का नाम का कोई जरूरत नहीं है, सॉरी आउटर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आउटर क्लास का नाम ही काफी है। अब मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जो जिसको कहते हैं हम लोग इनर क्लास, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर? इनर क्लास। नाउ आई विल शो यू द कांसेप्ट ऑफ इनर क्लास। बेसिकली इनर क्लास इज द कांसेप्ट, inner class is not static, that is non-static. Okay, and within inner class we can able to access all the member of the outer class, including the private member also. Look at the example. Same example. Here I create outer class, class outer. Within that outer class I declare three variables: static int, non-static int, private int. Now I define one inner class, public class, inner class. देखो inner class को भी public बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर क्लास को अगर पब्लिक बनाए उसके नाम के साथ फाइल नेम सेम करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनर क्लास क्लास का एक मेंबर होता है नॉर्मल, नथिंग एल्स। नाउ विद इन द डिस्प्ले ऑफ इनर क्लास आई कैन एबल टू एक्सेस outer underscore x, outer underscore y, outer underscore private. Clear? Clear? Yes sir. Now to invoke display within main we have to create object of inner class. রিপ্লাই দাও। ডিসপ্লেকে কল করতে গেলে ইনার ক্লাসটার অবজেক্ট বানাতে হবে তো? Yes sir. To create the object of non-static nested class or inner class, at first we have to create the object of outer class. প্রথমে outer class এর অবজেক্ট বানাতে হবে, এই যে বানানো। Then by using the reference we can able to create object of inner class. Look, outer class name dot inner class name space reference variable equals to outer class reference dot new space inner class name. Clear sir?
क्लियर सर? यस सर। Yes, तो sir. जब मैंने स्टैटिक नेस्टेड क्लास बनाया, स्टैटिक नेस्टेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आउटर क्लास का नाम ही काफी था, उसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ रहा था। मगर यहाँ पर आउटर नेस्टेड क्लास, आउटर क्लास से पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, उसके बाद मैं इनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना पाए उसका रेफरेंस के जरिए। क्लियर? Yes, sir. यस सर। कैंपसिंग में दोनों का डिफरेंस भी पूछता है, मैंने डिफरेंस भी यहाँ पर लिख दिया है, डोंट टेक चार्ज। Static nested classes do not directly access other member of the enclosing class because it is static. It must access the non-static member. That is, it cannot refer to the non-static member of its enclosing class. Because of this restriction, static nested class are seldom used. Static nested class outer class का सिर्फ static member को ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर पाएगा, दूसरा कोई member को डायरेक्ट इस्तेमाल कर नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग static nested class उतना इस्तेमाल कर नहीं पाते। मगर non-static nested classes access all the member, including the private member of the outer class. Clear, sir? Clear, sir? Yes, sir. So তোমাদের নেক্সট উইকে বোধহয় হাইরেডিয়াস শেষ হচ্ছে নাকি? Yes, sir. সো নেক্সট ফ্রাইডেও এরকম সকালবেলা নিতে হবে, তারপর ফ্রাইডে থেকে যেরকম কলেজের ক্লাস অনুযায়ী রুটিনে ক্লাস ছিল সেরকমই হবে। তো নেক্সট ফ্রাইডে আমি কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টটা পড়িয়ে দেবো, অল্প সময় থাকবে, কমান্ড লাইন আর্গুমেন্টটা পড়িয়ে দেবো, তারপরে ফ্রাইডে থেকে যেরকম ভাবে হয় সেরকম ভাবেই ক্লাস হবে। ঠিক আছে প্রত্যেকে? Okay, sir. তাহলে আজকে কিন্তু কম টাইম হলেও আমরা কিন্তু প্রচুর নতুন জিনিস পড়েছি। স্ট্যাটিক ভেরিয়েবল, স্ট্যাটিক মেথড, স্ট্যাটিক ব্লক, ইনস্ট্যান্স ইনিশিয়ালাইজেশন ব্লক, স্ট্যাটিক নেস্টেড ক্লাস, নন স্ট্যাটিক নেস্টেড ক্লাস। বাড়িতে প্রত্যেকে পড়ো, লিঙ্কটা ক্লোজ হয়ে যাবে, আর জয়েন করার দরকার নেই, বাড়িতে প্রত্যেকে পড়ো। কারোর কোনো কোশ্চেন আছে? No, sir. স্যার আপনি কি রেকর্ডিংটা পাঠাবেন? পাঠানো অনেকদিন আগে হয়ে গেছে, একটা ড্রাইভের লিঙ্ক পাঠিয়েছিলাম, তার মধ্যে সবকটা ক্লাস আছে, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে। খুলে দেখো সবকটা ক্লাস আছে।